Good morning, friends. Hope you are all doing well. So it's a new week. So how was your weekend? Hope you are all enjoyed. Today, students, we are going to learn the difference between the business, profession, and employment. You know that already we have discussed economic activity. Can you say the definition of economic activity? Yes. Economic activity means those activity which is done with an motive to earn the profit. That is known as what? Economic activity. And that economic activity we can classify it into three activities. One is known as business, and one is known as profession, and last one is known as employment. All the three have their own advantages also, as well as their limitations also. In business, the reward is in the form of, yes, you can say, the reward is in the form of profit, right? While profession, the reward is in the form of fees. While in job, that is in employment, the reward is in the form of salary or wages. In business, already we have discussed that it's a freelancership, right? That means any person can do the business, any legal full business he can do with the objective of earning profit. That is known as business. While profession means what? He can do the profession under any association also, or by independent also. Like a doctor. If a doctor is practicing in a hospital, he is as an employer, right? He is employed. He will get a salary for it. But if that doctor makes his own practice, then it becomes a profession. So they, right, so all have some specific characteristics, its advantages, and all have its specific limitations also. So today we are going to discuss the difference between these three topics. And friends, it's really very important topic, so let's see that. The first is the mode of establishment. How the it's established in business, what they want to say: entrepreneur decision and other legal formalities if necessary. In order to establish a business, what is the first thing they want to say? Entrepreneur decision and other legal formalities, right? Entrepreneur decision and other legal formalities if necessary. In profession, what they are saying: membership of a professional body and certificate of practice. Otherwise, they cannot do it. Like doctors are there, lawyers are there, chartered accountants are there. They want the certificate. While in employment, appointment letter and service agreement. Appointment letter should be there, as well as the service agreement is there. So let's see the first point again one more time, then it will be more clear. The first is, friends, mode of establishment. How it is to be established. What is the first line? Entrepreneur decision and other legal formalities. Right? Clear it is says that entrepreneur decision. Entrepreneur means the person who, what we say, who manages everything. That is all the factors of production. That is the entrepreneur. So here they want to say that entrepreneur decision and other legal formalities. Now, what is other legal formalities? To take the license from the local bodies or from the state authority or from the international authority to do the business. So, what is the first point? Entrepreneur decision and other legal formalities if necessary. And in profession, what they want to say: membership of a professional body like IMA, Indian Medical Association, like Bar Association is for the lawyer, and certificate of practice. Without that, they cannot do anything, right? Without that, they cannot practice. If they practice, it considered as invalid. So what they want to say in business: entrepreneur decision and other legal formalities. Right? Very simple. What they want to say: entrepreneur decision and other legal formalities if necessary. Profession, already we have seen membership of a professional body and the certificate of practice. While in appointment letter and service agreement. If a person joins in a job, what the employer will give? The employer will give an appointment letter that you have been appointed on this particular date and your salary will be this.
and service agreement. That is known as appointment letter. Clear? So let's start. First point is mode of establishment. So what is the answer? Entrepreneur decision and other legal formalities if necessary. While in profession, membership of a professional body and certificate of practice. And employment letter and service agreement. Nature of work. Now what is that nature of work? Nature of work means which type of work they are doing. We know that business can be do of manufacturing also, trading also, or service also, right? So let's see, provision for goods and services to the public. That is the simple and the best point they can say. Provision of goods. Provision means arrangement of goods and services to whom? To the public. So provision of goods and services to the public. And here, rendering of personalized expert service. Now what is that? Now what is that? Every profession has their own ethics. Like for example, a person who knows the AC service, so he is expert in that. Regarding AC, that is air conditioner, he know everything. So he is known as an expert. Like the doctor, like the surgeon, or like the lawyer, what they are expert in any field. So according to that, they provide the service. Already we have seen the definition also. Profession means a specialized knowledge gained in any field, and that specialized knowledge given to the society. किसको देते हैं हम? सोसाइटी को देते हैं. And in turn, और उसके बदले में क्या होता है? फीस इज चार्ज. इट इज नोन एज प्रोफेशन. तो यहाँ क्या लिखा है? Rendering of personalized expert service. Employment, performing work as per service contract or rules of services, right? Performing work as per services contract or rules of services. Now what is that? Performing work, काम करना as per सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किस तरह से काम करना है, जॉब का टाइमिंग क्या है, एवरीथिंग इट विल बी डिस्कस इन दैट, और रूल्स ऑफ सर्विसेज. तो दो पॉइंट हमने पढ़े फ्रेंड्स. द फर्स्ट इज मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड नंबर टू इज नेचर ऑफ वर्क. व्हाट वी हैव लर्न? मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी. Number two, membership of a particular association, that is a professional body, or and the certificate of practice. What is employment? Appointment letter and service of agreement. Nature of work. Now what is that? Provision for goods and services to the public while rendering of personalized expert service. Performing work as per service contract or rules of services. Now the third category comes to us is the qualification. Now let's see that. If we talk about this one regarding qualification, we know that in business it is not required. If qualification is there, it's well and good, but it is not compulsory that a qualified person or a degree holder person will do the business. It can be done by, yes, that is the answer, it can be done by anyone. कोई भी कर सकता है. इसलिए देखो क्या लिखा है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी. कोई जरूरत नहीं है. विदाउट क्वालिफिकेशन ऑल्सो द पर्सन कैन डू द बिजनेस. इसलिए लिखा है नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी और रिक्वायर्ड. क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड as prescribed by the professional body is a must. यहां देखो उसका उल्टा ही लिख दिया है. यहाँ क्या लिखा है? क्वालिफिकेशन. क्योंकि आज यहाँ पे कौन सा, ये कौन सा कर रहे हैं हम? प्रोफेशनल. प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है कि वो चीज में हमें एक्सपर्ट होना चाहिए, अदरवाइज हम प्रोफेशन कह ही नहीं सकते उसको. इसलिए क्या लिखा है? उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए. अगर एक एसी रिपेयर करने वाला है तो उसने भी आईटीआई किया होगा, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन. चार्ट अकाउंटेंट बनने के लिए आप जानते हो सीए करना पड़ेगा, राइट? डॉक्टर के लिए उसको डॉक्टरेट करना पड़ेगा, एमबीबीएस करना पड़ेगा, राइट? एमडी करना पड़ेगा. तो सब चीज के लिए अलग अलग पढ़ाई होती है कि क्या बन जाते हो? प्रोफेशन बन जाते हैं. क्वालिफिकेशन
expertise and training. और उस चीज में क्या लेना पड़ेगा? ट्रेनिंग. It is not like that after studying they directly become that professionals. They have to take a training, very hard training they have to take for 1 year, 2 year, and that is known as apprentice. And after that they will get the certificate from the professional body. So what they want to say, qualification, expertise and training in specific field, as prescribed by the professional body is a must. तो clear लिखा है, qualification, expertise and training, तीन चीज बोला है, qualification, expertise and training in specific field as prescribed by the professional body is a must. क्या क्या लिखा है? क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए इन स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज अ मस्ट. मस्ट मतलब कंपल्सरी. और जॉब में भी वैसा ही रहता है, जॉब के लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर इन योर लाइफ, so can you say what are the degrees you should hold? You should hold minimum B.Ed. Without Bachelor of Education we cannot teach in a school. Suppose we are teaching in a college, we require the minimum PhD, professor in doctorate in philosophy. In the same way, every job there is a requirement of specific qualification and training. Expertise नहीं बोला है, qualification and training as prescribed by the employer. So friends, 3 point पढ़े हमने. The first is the mode of establishment, number 2 is work, third is the qualification. So what we have learned in mode of establishment, entrepreneur decision and other legal formalities. क्या लिखा है? Entrepreneur decision and other legal formalities is necessary. और यहाँ क्या लिखा है? Membership of a professional body and certificate of practice. Membership of a professional body and certificate of practice. Employment में employment letter and service agreement, appointment letter and service agreement. Nature of work, now what is that? Provision of goods and services to the public. Provision of goods and service to the public. Profession, rendering of personalized expert service. Rendering of personalized expert service. Employment, performing work as per the service contract or rules of the service. Qualification, क्या पढ़ा हमने? No minimum qualification is necessary. और यहाँ पे qualification, expertise and training in specific field as prescribed by the professional body is a must. Qualification and training as prescribed by the employer. चौथा है reward or return. Now what is that? Reward or return means what? रिवार्ड का मतलब बदले में क्या मिलता है. इफ यू डू सम वर्क, व्हाट यू गेट इन रिटर्न ऑफ दैट इज नोन एज प्रॉफिट. सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस वन एंड दिस इज आई थिंक द मोस्ट इजीएस्ट पॉइंट इन दैट. चलो तो देखते हैं रिवार्ड में. राइट, सो इन बिजनेस व्हाट इज द रिवार्ड फ्रेंड्स? यस, वेरी इजी, इट्स प्रॉफिट. राइट, प्रॉफिट earned. While in professional fee. While in job, it's salary or wages, है ना? So what we can say, in business the return is in the form of profit, in profession the return is form of the fees, while in business, right, it is in the form of salary or wages. तो 4 पॉइंट पढ़े हमने. फर्स्ट इज द, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव लर्न? द फर्स्ट पॉइंट वी हैव लर्न हाउ टू एस्टैब्लिश. नंबर 2 इज वर्क, third is qualification. Points is more important. If you refer the points in a better way, you can write in your own words also, but points it should be perfect. Establish कैसे करना है, work कैसे, क्या काम होता है, qualification क्या है और reward क्या है. Now the fifth point is capital investment. तो क्या पैसे लगाने हैं, किसमें लगाने हैं वो सब. अब आप ही सोचो, पैसे किसमें लगते हैं? ऑब्वियसली इन बिजनेस. आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा था ना. When an owner start his business with cash, receivable, debtors,
तो ये सब जो होता है तो ये मतलब वो लेकर आता है बिजनेस में. सो व्हाट दे वांट टू से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर द साइज एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस. अगर बड़ा साइज है तो कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, कम है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा. तो व्हाट वी कैन से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर द साइज एंड द नेचर ऑफ बिजनेस. क्या है, कैपिटल investment is required as per the size, and the nature of the business. बराबर. So what we can say, capital investment required as per the size and the nature of the business, right? Yes, so we have started the fifth point, capital investment. So what we can say, capital investment required as per the size of the business and the nature of the business. So what we can say, capital investment required as per the size and the nature of business. और यहाँ क्या लिखा है, limited capital needed for the establishment. We know that in profession we require which capital, limited capital. Why limited we can say, because in profession we don't require the big scale of machinery, raw material and all. We require what, just office and all. So we require a mini, but we can say a limited need of capital. And in job, no need of capital only, because the whole investment is done by the employer, right? So let's see the first point, establishment. Number 2 is work, third is qualification, fourth is the return, fifth is the capital investment, sixth is the risk. Now sixth point is the risk. Now what is the risk? We know that in every business there is a risk, right? In every business already we have seen that, right? The risk is there, as well as the uncertainty of demand is there. तो यहाँ क्या लिखा है, रिस्क. प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन. क्या लिखा है देखो, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर. प्रॉफिट यू कैन नॉट डिसाइड कि इस साल मुझे कितना प्रॉफिट होगा, आज या आज के दिन कितने प्रॉफिट होगा. इट नेवर वी कैन डिसाइड, और हम कर भी नहीं सकते. ज्यादा भी हो सकता है प्रॉफिट, कम भी हो सकता है. डिपेंड्स लॉट ऑफ थिंग, डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग. सो लेट्स सी risk. What we can say, profit are uncertain and irregular while risk is present, है ना. सिंपल सा लिखा है, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, सो रिस्क इज देयर. प्रेजेंट का मतलब रिस्क इज देयर. So what we can say, profit are uncertain and irregular, so risk is there. और यहाँ क्या लिखेंगे, fee is generally regular and certain. Fees is क्या लिखा है, generally regular. Fees is generally regular and certain, so some risk is there. यहाँ पे fixed and regular पे no और little risk, right? जॉब में फिक्स पे रहता है, रेगुलर पे रहता है, इसलिए नो, बिल्कुल भी रिस्क होता नहीं, या फिर थोड़ा सा रिस्क होता है. व्हाट वी कैन से, रिस्क. प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, सो रिस्क इज देयर. फीस इज रेगुलर एंड सर्टेन बट सम रिस्क इज देयर. और यहाँ पे फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, सो नो और लिटिल रिस्क इज देयर. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. हम अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो शेयर है, हम किसी को दे सकते हैं. यस, इन बिजनेस वी कैन गिव, बट इन प्रोफेशन इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि जो सामने वाले बंदे के पास वो सेम क्वालिफिकेशन नहीं है, सेम एक्सपर्टाइज नहीं है, तो आई कैन नॉट पास टू एनी अदर. तो वो भी इंपॉर्टेंट है, और जॉब में तो बिल्कुल नहीं, है ना. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. नाउ व्हाट इज दैट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज. थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, लेकिन हो जाता है. अपनी वसीयत ऐसा सब होता है ना बिजनेस में. एंड क्लियर लिखा, इट इज नॉट पॉसिबल इन द प्रोफेशन. हियर आल्सो नॉट पॉसिबल इन द जॉब, राइट. तो ये हुआ हमारे 7 पॉइंट्स. व्हाट इज द फर्स्ट 7 पॉइंट? द फर्स्ट इज व्हाट, एस्टैब्लिशमेंट. सेकंड है वर्क, क्वालिफिकेशन, रिवार्ड और रिटर्न, capital requirement, risk, transfer of interest. So these are the some of the important points regarding the differences.
Now comes the concept code of conduct. Now, most of the students, I don't think that you heard the word of this code of conduct. Code of conduct का मतलब होता है there are some professionals who made the code of conduct कि ऐसे ही काम करना है आपको. So let's see that code of conduct. Right? No code of conduct is prescribed. Business में ऐसा कोई कोड नहीं है. हमें जैसा लग रहा है वैसे हम बिजनेस कर सकते हैं. So no code of conduct. यहाँ क्या लिखा है? प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलो करना पड़ेगा. राइट राइट, जो बोला है प्रोफेशनल बॉडीज ने हमें करना पड़ेगा. नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलो. राइट, क्या लिखा है? नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, जो एम्प्लॉयर बोले वैसे ही हमें चलना पड़ेगा. ठीक है, ओके. ये सम स्टूडेंट्स आर देयर, सम मेकिंग सम नॉइज, सो सॉरी फॉर दैट. Next is example. So what are the examples of them? So examples of what we can say in business, we can do a shop also, and we can do the factory also. And here we can do which type of business? It's legal, medical, professional, chartered accountancy and all. And here we can say the jobs we can do in banks, insurance company, government departments and all. So friends, we have learned these 9 topics, right? We have learned these 9 topics, right? So let's see that. So just have a short revision, whatever we have learned up to here. The first is what? Mode of establishment. So again, repetition. Just 1 minute. So let's start from the first point. First, we have learned mode of establishment. And number 2 is what? Nature of work. Third is the qualification, reward or return, capital investment, risk, transfer of interest, code of conduct, example, right? So friends, these are the most important points that we have learned in the difference. So one more time, let's see the difference. So what is the first point? Establishment, nature of work, qualification, reward, capital investment, risk, transfer of interest, code of conduct, and example. Now friends, we are going to see what is industry. Can anyone say from your side what is industry? Have you seen this industry? If you see the Discovery Channel and so one good documentary is coming, how it is made. So I am also seeing that it looks very great. You can see that big machines are there and lot of our daily products, it is produced in a very different way. कैसे बनाया जाता है? So it's an industry. So what is an industry? Industry means the place where the raw material is converted into the finished products. अब इंडस्ट्री को ही बहुत बांटा जाता है, मेनली 3 में बांटा जाता है. दैट इज वन इज द प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड द टर्टियरी. ये सब आगे आएगा एक एक करके. बट व्हाट आई वांट टू से, इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री का मतलब जहां पे वेयर द बिग मशीन्स आर देयर and from that the raw material is converted into the finished. raw material तो पता ही होगा आपको, कच्चा माल बोलते हैं हम उसको. ठीक है, अब चलो देखते हैं. रेडी, लेट्स. इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्या लिखा है? इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी which are connected with the conversion of resources into useful products. तो कितना बढ़िया डेफिनेशन, इतना अच्छी भाषा में लिखा है. इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक, क्या लिखा है? इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द conversion of resources into finished product or useful product. So what we can say, industry refers to economic activities. क्या लिखा है? industry refers to economic activity which are connected with, क्या लिखा है? which are connected with conversion of resources into useful goods. क्या लिखा है? इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी. इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स. आगे क्या लिखा है? जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज. क्या लिखा है?
Generally, the term industry is used for activities in which mechanical appliances and technical skills are required. सही है. मैकेनिकल मतलब जहाँ पे फैक्ट्री की बात हो रही हो, टेक्निकल मतलब जो लोग मशीन पे काम करना जानते हैं. Generally, the term industry is used for the activities in which mechanical appliances and technical skills are involved. These include activities related to क्या लिखा है? These include activities related to producing or processing of good as well as the breeding and the raising of animals also. इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है. प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स मतलब सामान को प्रोसेस करना, एज वेल एज ब्रीडिंग. ब्रीडिंग का मतलब नए को जन्म देना, ब्रीडिंग, एनिमल्स का ब्रीडिंग किया जाता है. एंड रेसिंग ऑफ एनिमल्स को ऊपर बढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना. The term industry is also used to mean group of firms producing similar or related goods. ये भी इंपॉर्टेंट है. सेम और सिमिलर कि देखो ना, एक ही प्रोडक्ट, जैसे नोटबुक चाहिए आपको तो कितनी सारी कंपनियां बनाती है आपके लिए, तो वैसा कहना चाहते हैं. राइट. द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर, right, or related goods. For example, cotton textile industry refers to all manufacturing units producing textile goods from cotton. Similarly, electronic industry would include all firms producing electronic goods and so on. Further, in common parlance, we can say certain service like क्या क्या सर्विस है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर ऑल्सो रेफर्स टू एन इंडस्ट्री. सेज banking industry, insurance industry, etc. Industries may be divided into three broad categories. Name अभी मैंने आपको बोला था, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी. तो हमको तो एक डेफिनेशन पढ़ना है, व्हाट इज इंडस्ट्री. बहुत सिंपल है. क्या लिखेंगे? इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड with the conversion of resources into useful goods. Right. फिर हम लिख देंगे industries can be classified into three types. ये भी पढ़ेंगे. Industries can be divided into three broad categories: primary, secondary and tertiary. अब now what is primary industry? Primary industry मतलब the industry which is very very close to nature, कुदरत के जो सबसे पास रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री. देखो, these industries are those activities which are concerned with the extraction and production of natural resources. हर चीज, जैसे कि हम हनी भी कह सकते हैं, हनी का एग्जांपल ले सकते हैं, मिल्क का एग्जांपल ले सकते हैं, पनीर, कर्ड, व्हाटएवर, जो भी आपको डायरेक्ट कुदरत से मिलता है, जैसे कि राइस, व्हीट, ये सब. तो व्हाट वी कैन से प्राइमरी इंडस्ट्री. These include all those activities which are concerned with the extraction मतलब अलग करना, and the production of natural resources and reproduction and development of living organisms, जैसे कि hens होते हैं, chickens होते हैं, वो सब, plant etc. देखो क्या लिखा है. Primary industry means those industry which are concerned with the extraction अलग करना and production नया बनाना of natural resources and reproduction and development of living organism, plant etc. So I think it's very clear what is primary industry. Primary industry are those industry which are involved in the extraction and the production of natural resources and the reproduction of development of living organism, plant etc. They are divided as follows. The first is extractive industry. Not extractive मतलब अलग करना. These industries extract or draw products from natural sources. क्या लिखा है? These industries extract or draw products from natural sources. Extractive industries supply some basic raw material that are mostly products of geographical or natural environment. क्या लिखा है? These industries extract or draw products from natural sources. अलग अलग करना. Extractive industries supply, क्या लिखा है? Extractive industries supply some basic raw material. Basic मतलब सबसे easy one. Basic raw material that are mostly products of geographical or natural environment. Products of this
Products of these industries are usually transferred into many other useful products या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जो भी छोटा मोटा सामान, उसको फिर बनाया जाता है. We can say the example of honey, right? What is extractive industries? ये देखते हैं. These industries extract or draw products from natural sources. Extractive industries supply some basic raw material that are mostly products of geographical or natural environment. कुदरत से जो मिलता है. फिर क्या करते हैं हम? Industries are usually transformed into many other useful goods by manufacturing industries. Important extraction industries क्या क्या आ जाता है? फार्मिंग. अब देखो वीट से क्या क्या बनाया जाता है ना. फार्मिंग है, माइनिंग है, लुम्बरिंग है, हंटिंग एंड फिशिंग. तो ये सब से हम गजब यूज कर सकते हैं. हम एक एक प्रोडक्ट का गजब यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स द जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक मतलब क्या होता है? देखो ये फार्मिंग भी देखो जेनेटिक होता है. आप अगर देखोगे फ्रूट्स में भी देखना, कोई कोई छोटे फ्रूट होते हैं, कोई बड़े होते हैं, वो जेनेटिक से बनाया जाता है. उसका टेस्ट भी नहीं रहता और अच्छा भी नहीं रहता सेहत के लिए. जेनेटिक इंडस्ट्री. दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट को भी वो लोग ब्रीड करते हैं नया एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए. व्हाट वी कैन से जेनेटिक इंडस्ट्री. दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन breeding plant and animals for their use in the further reproduction. फिर से वो नया अपने जैसे बनाए. Seeds and nursery companies are typical examples. Seeds and nursery companies are the typical example of genetic industries. In additional activities of cattle breeding, farms, poultry farms, etc., fish hatchery comes under the genetic industry. तो पता चल गया जेनेटिक. जो जिंदा चीजों में हम उसका उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्रीज. So friends, what we have learned today? We have learned the first we have learned is the topic difference between the business, profession and the job. And उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट देखे. Right? How to establish, what is the process of work, what is the qualification, what is the reward, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिस्क, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, एग्जाम्पल, ये हमने सब देखा. इंडस्ट्री पढ़ा. इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स. उसके अंदर हमने देखा कि 3 तरह की इंडस्ट्रीज है. प्राइमरी इंडस्ट्रीज. प्राइमरी में हमने देखा 2 तरह के इंडस्ट्रीज. एक तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा है जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव मतलब जो कुदरत से निकाल के उसको फिर हम आगे, जैसे कि फार्मिंग होता है, माइनिंग होता है, राइट, फिश फार्मिंग होता है, माइनिंग होता है, लुम्बरिंग का काम होता है, मतलब ये दिस वन रिलेटेड टू हनी बी है, हंटिंग, फिशिंग हो सब. जेनेटिक में हमने देखा प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग एंड ऑल. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट पीरियड फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू सी सेकेंडरी इंडस्ट्री. थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर. गॉड ब्लेस.